2022 Physics P2 today. So question number 1 is figure 1.1 shows a water skier pulled horizontally across the water surface. The mass of the water skier is 60 kg. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. Since it's a 2022 paper, that is why आपकी जो G की value है, it's 10. Otherwise, अब हम लोग जो G की value use करेंगे, that is going to be 9.8. So we have to calculate the weight of the water skier. So let me correct this value to be 9.8. We use the formula W equals to mg, mass is 60, and the value of G is 9.8. So you multiply it and you will get the weight for this. Okay, so this is your first part, or 60 times 9.8, we get 588 Newton. And we have to give the final answer to two significant figure. So if we round it off, so आपकी जो weight की value है, that will be 590 Newton. Part B में mass and weight have different units. State two other differences between mass and weight. ठीक है? Okay. So what is the first difference between mass and weight? So the first difference is that mass stays constant. Mass remains constant on every planet, whereas जो weight है, it can vary. While weight varies from planet to planet. Why? Because the value of G, or the value of gravitational field strength on every planet, is different. So this is your first difference. What is the second difference? So the second difference is weight is a vector quantity while mass is a scalar quantity. So weight is a vector while mass is a scalar quantity. Okay? Okay. Now, mass is the amount of substance, whereas the weight is the product of mass and the gravitational field strength. So he's just asking for 2 points, so these 2 points are enough. Now, a boat pulls the water skier to the right with a horizontal force of 50 Newton. The water skier travels at a constant speed. Explain in terms of the horizontal forces acting while the speed is constant. So, beta, when the object travels at a constant speed, तो हमें एक चीज का पता है कि जो resultant force होती है, the resultant force is zero. And why the resultant force is zero? Because the forward and the backward forces are equal. अब हमारे केस में what is the forward force and which one is the backward force? So देखो बेटा, we have this water skier and this water skier is being pulled by the force. ठीक है? So ये आपके पास आगे की तरफ इसको एक force खींच रहा है. Or when he is moving in the forward direction, so the resistive force due to the water is acting in the opposite direction. Okay, so we call it frictional force with the water, or we call it a drag force. Drag force जो होती है ये आपकी liquid के अंदर present होती है. So this is a drag force which is acting in the backward direction, and we have tension in the wire or in the cable which is pulling the water skier in the forward direction. ठीक है? So one mark कि since the speed is constant, so we can write कि resultant force is 0 Newton. And what is the other point?
The other point will be the forward force, the forward force, which is the tension, and the backward force, which is the drag force, they both are equal. So tension in cable, ठीक है, brackets में I am just writing a forward force is equal to ड्रैग फोर्स. सो ड्रैग फोर्स कब होती है? जब आपके पास ड्रैग फोर्स इज अ रेजिस्टिव फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड्स. Okay, so equal to drag force which is acting in the backward direction. So when they both are equal, so the object will travel at a constant speed. Second part में वो आपसे कह रहे हैं the horizontal force acting to the right increases from 50 to 70 Newton. The sizes of any other forces are unchanged. Calculate the acceleration of the water skill. So a resultant force increase हो गई है. So what is the net resultant force? That will be 70 minus 50. It is 20 Newton. Now, what is the formula for resultant force? F is equals to ma, mass into acceleration. So, if I rearrange the formula for making acceleration as the subject, ये m इधर divide होगा with f. So, f is 20. And what is the mass? The mass of the water skier is 60. So, it's going to be 20 over 60. That will be 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपके पास ये 3 मार्क है. सो 3 मार्क में 1 मार्क if you calculate the resultant force which is 20 Newton. Okay, so the resultant force is 20 Newton. We get 1 mark for this. 1 mark आपने अगर correct formula लिखा होगा for this, and 1 mark is absolute for the answer. Okay, so ये हमारे पास we are done with this question number 1. ठीक है, now moving on to question number 2. So question number 2 में figure 2.1 shows a long cardboard tube sealed at both ends which contains many small pieces of metal. So we have this small metal tube and it's got small pieces of metal. The tube is turned vertically so that the pieces of metal fall from one end to the other. The temperature of the pieces increases as a result of the fall. So he's saying कि ये जो metal की tube है, we turn this metal tube vertically. So when you move this metal tube vertically, so these small pieces that were just present at the top, so these small pieces are going to fall downwards. During the fall, the gravitational potential energy of the metal pieces is transferred to other forms of energy. State 2 forms of energy to which the gravitational potential energy is transferred. So beta, जब ये metal pieces एक height पे है, so when they are at a certain height, so they possess gravitational potential energy. And when these metal pieces, when they are falling, so they start moving. और movement की वजह से कौन सी energy produce होती है? Kinetic energy. So it means कि state 2 other forms, तो एक हमारे पास होगी kinetic energy. And when these metal pieces, when they hit the other end of the metal tube, so these metal pieces are converted into heat or thermal energy. So heat energy, or we can also say sound energy as well. So 2 marks for this. Okay, now next up, the pieces fall an average distance of 1.2 meter. ठीक है, again जहां जहां पे g की वैल्यू 10 mentioned है, we have to use the value of g as 9.8. ठीक है,
Okay, the pieces fall an average distance of 1.2 meter. The total mass of the metal pieces is 150 grams. Calculate the loss in gravitational potential energy of the pieces as they fall once. So what is the formula for gravitational potential energy? It is mgh. Mass कितना दिया हुआ है? 150 grams. So we have to convert grams into kgs. So for that, we will divide 150 by 1000, and the value of G is 9.8 and the value of H is 1.2. So you can directly substitute these values on your calculator and we get the answer to be 1.176. 1.176 joule. Okay. So agar unit mentioned nahi hai, so you have to give the SI unit with the answer. Now we have to round off the answer to two significant figures. So two significant में पहला digit ये दूसरा ये, तो 1 से अगला 5 से बड़ा है. So we add 1 into this, so it's going to be 1.2 joule. Now a student turns the tube quickly. After the small metal pieces have fallen from one end to the other 80 times, their temperature has increased by 7 degree Celsius. ठीक है? Determine the specific heat capacity of the metal. So we have to calculate the specific heat capacity of this metal. अब देखो, specific heat capacity के लिए we have studied this formula. Q is equals to mc delta T. Q stands for heat energy. M is the mass. C is the specific heat capacity. And delta T is the change in temperature. Change in temperature. Okay, now beta, what is the mass? So a student turns the tube. Okay, so the total mass of the metal pieces is 150 grams. So we have to take the mass in kgs. So the mass in kg is 0.15 kg. So now the mass of the, okay, we have to determine the specific heat capacity. So since we have to find the value of small c, so we make small c as the subject in this formula. So the, yes, yes, yes. अभी तो शुरू हुई थी. It will end at 1. अगर बाकी कोई मिल सकते हैं इसे भी सामान से कह रहा कि वो एक दफा देखें. Okay, so if I make small c as the subject, so this is going to be, so small c is Q over m delta T. So Q is the heat energy, okay, and the heat energy that we calculated, the loss in the gravitational potential energy is going to be converted into thermal energy. अब बेटा अगर आप कोई पिछले पार्ट का आंसर यूज करोगे, so we don't have to use the rounded off value, we have to use the exact answer. So the loss in gravitational potential energy was 1.176 divided by the mass is 0.15 और उसने आपको बताया कि temperature increases by 7 degrees Celsius. So the change in temperature is 7. Okay. अब उसने आपसे एक और बात की हुई थी कि the student turns the tube quickly after small metal pieces have fallen from one end to the other 80 times. So these metal pieces have fallen 80 times. So यहाँ पे
हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है वो 80 दफा कन्वर्ट होगी. सो दिस इज द रीजन आई हैव टू मल्टीप्लाई 1.176 विद 80, क्योंकि वो 80 दफा जब मूव करेगा सो इट गेन्स द थर्मल एनर्जी 80 टाइम्स. दिस इज व्हाई वी मल्टीप्लाई इट विद 80 as well. Okay, so now once we put the whole value or all of this expression on the calculator, so what is the answer that we get? So we get 89.6. So we get 89.6. Now what is the SI unit? SI unit for thermal energy is joule and mass का होता है kg. So joule per kg per degree Celsius. So this is going to be the SI unit for this. Now it is for 3 marks. 1 mark agar aap, if you write the correct formula. 1 mark if you write the correct answer with its SI unit. Okay, and 1 mark if you have substituted the values correctly into the expression. So this is how we will score 3 marks. Okay, now moving on, एक दफा मैं quickly बता देता हूँ. The formula is Q is equals to NC delta T. We have to find specific heat capacity, so we make small c as the subject. So the formula becomes Q over N delta T. Q is the heat energy. जो पिछले पार्ट में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है, that gravitational potential energy is converted into heat energy. Okay, अब ये एक दफा conversion है when you just drop it once. अब क्योंकि 80 दफा उसने कहा है कि fall हो रहा है, so we multiply that value with 80. We don't use the rounded off answer, we use the exact value from the previous part. Then we have to put the value of M, and we have to put the value of change in temperature is 7, and at the end we have to give the final answer to two significant figure. So if I round off 89.6 to two significant figure, so the final answer will be 90 joule per kg per degree Celsius. Okay, now the student repeats the experiment, turning the tube more slowly. Suggest why a different temperature increase is obtained. ठीक है? Okay, so अब आपसे वो कह रहे हैं कि the student has performed the experiment again. This time he is turning the tube slowly. So when he turns the tube slowly, suggest why a different temperature increase is obtained. So different temperature increase की वजह एक तो ये हो सकती है कि more energy is lost. Okay, so more energy is lost in form of heat. ठीक है? Yes. क्या? अच्छा, दूसरी चीज देखो, उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कम है. तो अगर उसकी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, तो जब वो कन्वर्ट होगा दूसरी फॉर्म में, तो डेफिनेटली वो कन्वर्जन भी कम होगी. ठीक है? सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलर. ठीक है? सो अगर उसकी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उसकी वजह से जो हीट एनर्जी मतलब जो कन्वर्ट हो रहा है जिस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, वो भी आपकी कम होगी. और व्हेन वी आर सेइंग कि मोर हीट एनर्जी इज लॉस्ट, so in form of heat, so basically rather than those metal pieces, they absorb the heat energy and keep those heat energy into them. The heat energy is lost into the surroundings. ठीक है?
तो उनका अपना जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो कम होगा। फिर अगर वो मेटल के पीसेस एनर्जी को रिटेन नहीं करते, ठीक है, और वो लूज कर देते हैं एनर्जी, तो उनका जो टेम्परेचर इंक्रीज है या टेम्परेचर चेंज है वो कम होगा। And since their starting kinetic energy is smaller, so definitely conversion के बाद उसकी energy जो है वो that will also be lesser. Now in the next part, figure 3.1 shows a syringe mounted vertically in a block of wood and sealed at one end. A plunger is free to move inside the syringe. There is trapped air in the syringe. Okay, so we have this plunger and we have a trapped air inside. We have this end is sealed. The air inside the syringe exerts a pressure on the walls of the syringe. So define the term pressure. मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि if you remember the formula, so it's very easy to define it. So pressure का formula होता है force over area. So force per unit area. You just have to add the word per unit and you get the definition. So force per unit area is called as the pressure. Explain how the air molecules in the cylinder of the syringe creates a pressure. ये 3 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। सो अब आपने ये 3 पॉइंट्स जो है वो याद कर लेने हैं कि molecules air molecules are in constant random motion. Air molecules are in constant random motion, ठीक है, and collide with each other and walls of container, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट कि एयर के जो एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये आपस में कोलाइड करते हैं and they are also hitting. So these are the walls of a container and they are constantly colliding with the walls of container as well. Okay? फिर अब आपके पास क्या होता है कि there is a change in momentum. Okay? अब क्योंकि जब ये मूव करते हैं ना तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज है वो चेंज हो रही होती है। सो रेट ऑफ change in momentum, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एयर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस फोर्स, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस force and when these air molecules exert force per unit area, so that is called as the pressure. So force exerted on walls per unit area produces pressure, ठीक है। प्लीज बेटा ये की पॉइंट है, ये 3 मार्क का बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ हाउ द एयर मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर क्रिएट अ प्रेशर। एयर मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, they collide with each other and walls of container. Due to the rate of change of momentum in air molecules, it produces force. क्योंकि हमने force की definition पढ़ी हुई है ना कि force is the rate of change of momentum. And when they exert force per unit area on the walls, that produces or causes a pressure. Okay, a 10 Newton weight is placed on top of
the plunger moves down slowly so that the temperature of the air inside the syringe does not change. Before the weight is placed on top of the plunger, the pressure of the air inside is 1 into 10 raised to power 5. So this is initial pressure. ठीक है? In Pascal. So this is in Pascal. The volume of the air. So the volume of the air is 50 cm cube. So this is your initial pressure. ठीक है? And this is the initial volume that is given to us, which is 50 cm cube. Cross-sectional area of the plunger is 1.2 times 10 to the power of minus 4. Calculate the pressure of the air in the syringe after the plunger stops moving. ठीक है? Okay. So अब उसने आपको बेटा यहाँ पे a 10 Newton weight is placed on top of the plunger moves down slowly. ठीक है? Okay, so basically he is saying कि ये जो plunger ये है इसके टॉप पे क्या किया है, एक ब्लॉक रख दिया है, and this block has a weight of 10 Newton. So इसका जो weight है, that is actually a force which is exerted by the block on the plunger. ठीक है? Okay. Now, what is if he is saying that the cross-sectional area of the plunger is 1.2 times 10 की power minus 4. So what is the cross-sectional area of this? So इसका जो cross-sectional area है ये ब्लॉक है और ये जो प्लंजर का टॉप है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने हमें बताया हुआ है. तो हमें फोर्स भी पता है और हमें एरिया भी पता है. तो यहां से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला फॉर प्रेशर P इज इक्वल्स टू F ओवर A. अब यहाँ पे फॉर्मूला का मार्क क्यों नहीं होगा? यहाँ पे फॉर्मूला का मार्क इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आपसे प्रेशर की डेफिनेशन पिछले पार्ट में पूछ ली थी. Okay, so force is how much? That is 10 Newton and the cross sectional area is 1.2 into 10 की power minus 4. आप ये directly expression calculator पे put कर दो and you will get the final answer 10 divided by 1.2 into, so we get 8 and 4 threes, 1, 2, 3, 4.3 Pascal. Now we have to give the final answer to two significant figure. So the final answer will be how much? So it's going to be 8.3 into 10 raised to the power of 4. Sorry? किसका? प्रेशर का आंसर न्यूटन्स में नहीं देता. नहीं, प्रेशर का ऐसे यूनिट जो है, the SI unit of pressure is Pascal. Okay, so we get, let's say 8, 3, 1, 2, 3. So if you round it off to two significant, पहली place पे ये और दूसरी पे ये है, so 8, 3 and then decimal तक we just simply write zeros over there. ठीक है? Okay, now we get 1 mark for this value. Or if you have substituted the values of force and area correctly. So calculate the pressure of the air in the syringe after the plunger stops moving. ठीक है? Okay, so now what we have to do is 4, 5. So we get 1.7 into 10 raised to the power of, yeah. अब देखो बेटा, अब ये तो आ गए pressure of the air in the syringe after the plunger stops moving. उसने आपसे ये कहा है कि the pressure of the air before the weight is placed on top of the plunger, the pressure of the air inside the syringe is how much? That is 1 into 10 raised to the power of 5
पास्कल, ठीक है। तो इनिशियल उसका प्रेशर ये है, ठीक है। आफ्टर यू प्लेस द प्रेशर, तो ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक ये दिस ब्लॉक जस्ट क्रिएट्स अ प्रेशर, और ये प्लंजर आपका इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। द एयर विच इज ट्रैप्ड इनसाइड, इट ऑलरेडी हैड अ प्रेशर, वो उसके प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा होगा। तो नेट प्रेशर क्या होगा, इनसाइड जो प्रेशर था दैट वाज 1 into 10 to the power of 5, और जो ये ब्लॉक की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज 8.3 into 10 raised to the power of 4। तो रिमेनिंग या नेट प्रेशर कितना रह जाएगा, इन दोनों प्रेशर को हम माइनस कर देंगे। सो वी विल राइट, ठीक है, what is the final pressure? Final pressure would be 1 into 10 raised to the power of 5 minus 8, 1 2 3 4.3। तो इसको इससे माइनस करता हूं, since this is not the final answer, so we don't need to round it off, okay? Okay, so now once you subtract these two readings, so we get 1 1 1 2 3 4, ठीक है। So we get this, and if you round it off to two significant figures, so the final answer would be 1 7 1 2 3। So this is going to be the final pressure. Okay, you can also write it in significant figures as well, ठीक है, -8 3। Yeah, I hope it's clear to everyone. If you have any question, any query in this, so please, beta, you can just drop me a message on the WhatsApp. So I'll respond back to you in the class then. Okay. So the question was, उसने आपको ये बताया कि we had a 10 Newton weight, और ये जो 10 Newton का weight है, वो आपने प्लंजर के टॉप पे रख दी है। अब इसका एरिया बताया हमें प्लंजर का। So pressure का formula होता है force over area. So we get the pressure that is exerted by the block, and that same pressure will be exerted by the plunger on the trapped air which is inside. ठीक है, once you have that pressure exerted by the plunger, the pressure that was already inside was 1 into 10 to the power of 5. So we calculated the net pressure on the trapped air. So you subtract these two pressures and you get the net value. ये pressure है ना, उसे कहा हुआ था pressure of the air inside the syringe is already this, तो net pressure होगा इन दोनों pressure को minus कर दिया। अब आपसे कहते हैं calculate the volume of air inside the syringe after the plunger stops moving. So we use the Boyle's law equation, P1 V1 equals to P2 V2. So what is the initial pressure? Initial pressure was 1 into 10 raised to the power of 5. Initial volume is 50 cm cube. So the final pressure that we calculated is 1 1 1 2 3 4, 1 tetra 6, and the final volume is to be calculated. ये V2 से multiply हो रहा है, shifted to the other side, and it will be divided. ठीक है, so you just put the whole expression on your calculator and you will get the final answer. So we get the final answer as 300 cm cube. I have decided. Wow. Okay, I hope it's clear to you now. ठीक है? So we have to use the equation P1 V1 is equals to P2 V2
P1 is your initial pressure, V1 is the initial volume, P2 is the final pressure, and V2 is the final volume. Okay? And you just have to uh, substitute the values into the expression and we get the final answer for this. So calculate the volume of the air inside the syringe after the plunger stops moving. ठीक है? Okay. Let me. Okay. Figure 4.1 shows a ray of white light incident on a glass prism. Refraction causes the white light to separate into different colors. Define the term angle of refraction. ठीक है? So how do we define angle of refraction? So angle of refraction is basically the angle between the refracted ray and the normal line. So angle between refracted ray and normal. Yes. So what is the other mark for? ठीक है. ओके सो एक मार्क तो हमारे पास इस चीज का हो गया कि एंगल बिटवीन योर रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. ठीक है. अब जैसे लेट्स से बेटा ये व्हाइट लाइट है. व्हेन दिस व्हाइट लाइट एंटर्स इनटू द प्रिज्म तो सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ अ नॉर्मल लाइन. So what is a normal line? Normal line is basically a line that is perpendicular to the surface. ठीक है. एंड आप नॉर्मल लाइन के बारे में आप उसको बता दोगे कि व्हाट इज अ नॉर्मल लाइन एंड नॉर्मल लाइन इज perpendicular to surface. Okay, so this is how we have to define it. ठीक है. So it is the angle between the refracted ray and the normal, and the normal line is actually perpendicular to the surface. So this is normal. This is your incident ray, and this one is the. These two are actually your refracted rays. ठीक है. ये रिफ्रैक्टेड रेज है. सो ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान एंगल होता है दिस इज योर रिफ्रैक्टेड एंगल और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. The angle of incidence of the white light as it enters the prism is 40 and the angle of refraction of the red light is 25. So angle of incidence is 40 and the angle of refraction of the red light is 25. So we have to calculate the refractive index of the red light. So सबसे पहले we need to remember the formula for the refractive index which is sin I over sin R. I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. So, sorry? Refractive index is the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. और एक चीज याद रखो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एयर वाला जो एंगल होगा वो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसी डेंसर मीडियम का होगा जैसे कि ग्लास या फिर वाटर. ओके सो जैसे कि ग्लास और वाटर. सो एयर यहाँ पे हमेशा लेस्टेंस वाला एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है. Now, if we put the values on the calculator, so what do we get? Sin 40 over sin 25 gives us 1.52 and we have to give the final answer to 2 significant. So we will write the answer as 1.5. ठीक है. और जो refractive index होता है, it has
नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, यूजिंग फिगर 4.1 state and explain how the refractive index for the red light differs from the refractive index for violet light। ठीक है, अब अगर आप if we do the comparison, so angle of refraction for red light is greater than the angle of refraction for the angle of refraction for the red light is greater than the angle of refraction for the violet light। ठीक है, ओके। सो बेटा इसका ये मतलब है, सो पहली चीज अगर मैं ये कहूं कि या सो पहली चीज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट is greater than violet light। अब देखो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। अगर तो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही छोटा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट is smaller than violet light। ठीक है, okay, so that will lead us to 2 mark, 1 mark for this and the other mark for this point। The source of white light used in figure 4.1 produces other types of electromagnetic radiations as well as visible light। State the name of the invisible radiation found at P and the invisible radiation found at Q। ठीक है, okay, so उसने आपसे कहा है कि the source of white light produces other electromagnetic radiations। other electromagnetic radiations में हमारे पास कौन कौन सी थी, जी एक्स यू वी आई एम आर, जी एक्स यू वी आई एम आर, गैमा, एक्स-रेज, ultraviolet, visible light, infrared, microwaves, and last में we have radio waves। अब देखो ये जो तीन टाइप होती है ना, ये तीनों इकट्ठे इमिट होती हैं। जैसे कि ये सन इज इमिटिंग दीज 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस। अगर कोई व्हाइट लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस ultraviolet and infrared radiations as well। So we will write ultraviolet and infrared। Okay, so the other type of waves are these। Okay, now question number 5. A student connects a battery, thermistor X and resistor Y in parallel as shown in figure 5.1। The EMF of the battery is E. The current in X is I. The resistance of Y is greater than the resistance of X। So resistance of Y is greater than resistance of X। अब आपसे वो ये कह रहा है कि the two boxes want to show the correct statement about the potential difference, ठीक है, across Y, and the other to show the correct statement about the current in Y। So the potential difference, yeah, so the potential difference
सो पहली स्टेटमेंट हमारे पास है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y इज लेस देन E। ठीक है, तो उसने कहा है टिक टू बॉक्सेस वांट टू शो द करेक्ट स्टेटमेंट about potential difference across y and the other to show the correct statement about the current in y. So potential difference across y is not less than E. X and y, they both are connected in parallel. और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज द वोल्टेज दैट इज इक्वल टू ई। करंट डिवाइड होता यस, सो ये स्टेटमेंट जो है दिस इज नॉट करेक्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वाई इज इक्वल टू ई, सो वी place a tick in the middle box. The current in y is less than is less than I. Okay, yeah, or it is equal to I or it is greater than I. So let's see. रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उसमें Exactly. जब आपके पास करंट आता है और जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, तो मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट बताई थी कि करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। अब क्योंकि x की रेजिस्टेंस कम है, तो x में जो करंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो x में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है कंपेयर टू y, सो द करंट इन y इज लेस देन द करंट I। सो यहां पे हम टिक करेंगे लेस देन वाले बॉक्स पे। फिर नेक्स्ट पार्ट में वो हमारे से क्या कह रहा है, या so the student connects the thermistor X in series with the resistor Y and a battery of EMF 6 volt as shown in figure 5.2. In this circuit at room temperature, the resistance of thermistor X is 600 ohms, and so the resistance of X is, and the current in thermistor, ये ohms का symbol है, and the current in thermistor X is 0.002 amperes. Calculate the power produced in the thermistor. अब पावर के तीन फॉर्मूलाज थे, P is equals to IV, P is equals to I square R, या फिर P is equals to V square over R. अब हमने कौन सा यूज करना है, we know the current and we know the resistance. So we will use second formula, P is equals to I square R, 0.002 का square into the resistance is how much, that is 600 ohms. So we get the value of power which is 0.0024 watt. 24 watt. ठीक है? So this is how you calculate the power produced in thermistor. Okay, next up we have to calculate the resistance of Y. So सबसे पहले तो बेटा, since they are connected in series, so the current will be the same. Y में से भी 0.002 एम्पेयर करंट ही फ्लो कर रहा है। We can calculate the voltage across X. V is equals to IR. X में करंट कितना है, 0.002, और X की रेजिस्टेंस कितनी है, 600 ohms. So we get 600 times 0.002 and we get 1.2 volts. ठीक है, so this is the voltage across X. अब अगर X को 1.2 volts मिल रहे हैं, तो Y को, अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो 6 में से 1.2 वोल्ट X को मिल गए, बाकी के Y को मिलने हैं, तो 6 minus 1.2 we get 4.8 volts. So अब मुझे Y के अक्रॉस वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है, and I have to calculate the resistance of Y. So we use the formula R is equals to V over I. वोल्टेज कितना है Y को मिल रहा, 4.8,
And how much is the current? And the current is 0.002. So 4.8 divided by 0.002, we get 2400 ohm. So this is going to be the resistance of Y. The thermistor is cooled. अब हमें थर्मिस्टर के बारे में वो बात याद होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर is inversely proportional to temperature. अगर कूल हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विल इंक्रीज क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है. सो मैं पहली बात तो वैसे ही लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस. अगर किसी एक भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है सर्किट में सो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है. सो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट increases. Explain why this causes potential difference across Y to decrease. So ये आपसे कह रहा है बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज क्यों कम हो रहा है. अब पहली चीज रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगा. करंट विल इंक्रीज. ठीक है. सो करंट विल इंक्रीज. ठीक है. सो करंट विल इंक्रीज. अब उसने आपसे एक चीज कही है कि ये बताओ बिल्कुल सही बात. कि वाई सब बच्चों को बताएंगे, एंट्री मारी है मैंने. करंट विल increase In net and since we are saying that the current will increase. अब देखो X की रेजिस्टेंस क्या हुई है. कम हुई है. The thermistor is cooled. Explain why this causes the potential difference across Y to decrease. So the resistance of the thermistor has increased. अब हमने एक चीज मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर अब अगर X की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा बिकॉज सीरीज के अंदर. ठीक है. अब देखो इसमें से मैंने करंट करंट डिक्रीज होगा. सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे कि करंट विल decrease because the current and resistance they have a inverse relation now. So current will decrease. अच्छा अब दो करंट डिक्रीज हो रहे हैं but still the potential difference across X will increase because the resistance of X has increased. So अब आप उसको ये बताओगे कि more potential difference ठीक है across X और Y में Y का पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से कम करंट जो है ना वो फ्लो कर रहा है इसीलिए. ठीक है. सो Y में से जो है कम जब करंट होगा तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर में R कांस्टेंट है तो वोल्टेज भी कम होगा क्योंकि करंट जो है सॉरी. So what is the difference between current and voltage? Current is charge per unit time. Voltage is energy per unit charge. करंट आपको ये बताता है कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं टाइम में और वोल्टेज आपको ये बताता है कि वो चार्जेस के पास कितनी एनर्जी है जो वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं. Okay, question number 6. Figure 6.1 shows part of a toy which contains two ring-shaped permanent magnets. A plastic rod passes through the center of both magnets. We have a top magnet and we have a bottom magnet. The top magnet can move up. Okay. So the top magnet can move up and down freely around the plastic rod.
The magnet poles on the bottom magnet are shown in figure 6.1. The top magnet floats in the air above the bottom magnet. On figure 6.1, mark the poles on the top magnet and explain why it floats in the air above the bottom magnet. So अगर आपके पास यहाँ पे नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ होना चाहिए and we will have a south pole at the top face of the top magnet. Similarly, we will have a north pole at this end and a south pole at this end. Because वो repel कर रहे हैं तभी top magnet जो है वो हवा में है. अगर opposite poles होते so they would have been attracted towards each other. Sarasama की class. Sarasama level. Okay. So अब क्योंकि ये repel कर रहे हैं, this is the reason. So like poles repel each other. The top magnet floats in the air above the bottom magnet. On figures, mark the poles and explain why it floats in the air above the bottom. तो अब आप उसको ये बताओगे कि like poles repel each other. Okay. फिर दूसरी बात आप उसको ये बता दो. Hence, bottom end of top magnet will also have a north pole. ठीक है? Hence, bottom end of top magnet has north pole to repel top end of bottom magnet. End of bottom magnet. ठीक है? Which is also a north pole. So one mark तो आपको इस चीज का मिल जाएगा कि आपने उसको बता दिया है कि जो like poles हैं they are going to repel. और 1 mark आपका इस बात का है, अगर आप ये वाली बात नहीं भी लिखते तो you will still get 1 mark. और 1 mark if you place the correct poles on your diagram. The top magnet is replaced with a ring made of iron. Explain why the iron ring sticks to the bottom magnet. Exactly. So iron is a temporary magnet और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिज्म उस पर इंड्यूस हो जाएगी. ठीक है? और उस पर ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस होंगे जिसकी वजह से वो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे एंड द आयरन रिंग विल बी अटैच्ड टू द बॉटम मैग्नेट. तो यस, तो अब आप क्या बताओगे? आयरन इज मैग्नेटाइज्ड by bottom magnet. ठीक है? फिर आप उसको ये बता दोगे कि साउथ पोल is induced on iron ring and attracted to north pole of bottom magnet. So this is for 2 marks. 1 mark if you write the iron has been magnetized, and the other mark is the south pole is induced on the iron ring and attracted to the north pole of the bottom magnet. A wire carrying a current passes at right angles through a piece of paper. Figure 6.2 shows a cross and circle where the circuit in the wire passes into the plane of the paper. On figure 6.2, sketch 3 magnetic field lines to show the magnetic field pattern around the wire. ठीक है? So wire की closest strong होगा. Sorry?
Might be close. Magnetic field will How strong. do we add shapes? Shape वाला ऑप्शन किधर चला गया? Avoiding shape. Oh, here it is. Yeah. So we have to draw three field lines. Oh, I have to look for a ring one. ओके बस अच्छा मैं लेते वैसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ खैर वो आपसे ये कह रहे हैं कि वी हैव टू ड्रॉ इनके स्पेसिस रेगुलर हैं। यस लेकिन वायर के करीब तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, तो एक क्लोजर नहीं होनी चाहिए वायर के करीब। ओके okay so we have these three magnetic field lines pardon my circle ठीक है बड़े ऑफ किस्म के बन गए मेरे से बट इट्स फाइन ऐसे क्या? या हाँ तो वो देखो दरमियान वाली जो है स्टार्टिंग यस थोड़ी क्लोज है। exactly so we have to draw three circles अब आपके पास when a wire carries current into the page तो अब आप if you use the right hand grip rule तो आपके पास जो field lines हैं they are going to be clockwise so you have to mark the correct arrow direction as well ठीक है so the field lines are going to be clockwise since it's carrying current into the page okay now let's just talk about the next thing right hand yes so if you use the thumb so curl of the finger will give you okay what is the direction of the magnetic field lines around it okay yes so it's just a right hand thumb okay now we have a question figure 7.1 shows the speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road ठीक है it's a speed time graph describe the motion of the car 3 mark मैंने आप लोगों को ये चीज पहले बताई थी कि ये एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली आता है कि वी हैव टू एक्सप्लेन अब हम अपने इसको मोशन को स्प्लिट कर लेते हैं सो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to 10 seconds acceleration is constant ठीक है so we have constant acceleration अगर आप ये लिखते हो कि speed is increasing उसका मार्क नहीं मिलेगा either you'll have to specify कि speed is increasing at a constant rate yes so constant acceleration फिर from 10 to 20 acceleration is 0 or speed is constant so from 10 to 20 constant speed or you can write acceleration is 0 meter per second square. ठीक है 1 mark for that 1 mark for this and the third mark है from 20 till 24 constant deceleration from 20 deceleration को negative acceleration. yes you can also write constant negative acceleration which is also deceleration okay और ये आप ग्राफ से देख के बता सकते हो कि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट और नेगेटिव है यहाँ पे which means कि इसकी acceleration is negative and constant speed time graph में ये graph हमें distance yes अगले में कहते हैं use figure 7.1 calculate distance traveled by car during 24 seconds of its motion show your working alhamdulillah excuse me okay so we have this shape ये क्या है this is a trapezium so मैं इसमें if I want to find the area of this trapezium because जो speed time graph होता है
इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है that gives us the distance. So area under the graph will give us the value of distance and the gradient gives us its acceleration. Okay, now in order to find what is the formula to calculate area of trapezium, half into height into sum of parallel sides. Parallel sides. So this is the formula. Now this is going to be the height. ये इस ट्रेपीजियम की हाइट है. ओके, एक पैरेलल साइड ये होगी and the other parallel side will be this one. So ये पूरी लेंथ है 24 और ये लेंथ कितनी है 20 minus 10 10. हाइट कितनी है 16. हाइट आपने यहां से ग्राफ से रीड कर ली. हाइट है 16. So now we just have to put the values in the formula. So 1 over 2 height is 16 और parallel side एक 10 है और एक 24 है. So you put the whole thing on the calculator and we will get the final answer. ठीक है? So half into 16 into 34 we get 272 meters. Round out the final answer to two significant figure. So we get 270 meter. Calculate the average speed of the car during its motion. Now, what is the formula to calculate the average speed? Total distance traveled over total time. So total distance over total time. This is the formula for the average speed. Total distance is 272 meter and total distance has been covered in a time of 24 seconds. So we get 11.3 meter per second. A second car travels at a steady speed. It travels the same distance as the first car in 24 seconds of the journey on figure 7.1. Steady speed का मतलब क्या है? Constant speed है. तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ये होगा थ्रू आउट. अब उसने आपसे कहा है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एज 272 इन अ टाइम ऑफ 24. तो अगर मैं डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला यूज करूं तो इसकी जो स्टेडी स्पीड है वो इसकी एवरेज स्पीड ही है which is 11.3. So we have to draw it on the graph. So 12 इधर है 8 और 10 8 और 12 के बिटवीन होता है 11. ठीक है. सो 11.33 आपका लेट्स से ये 8 8.4. so 11.3 is somewhere. So you will draw a horizontal line from 0 till 24 for this second graph. उसकी स्पीड कांस्टेंट है 0 से लेकर 24 तक. ठीक है, मतलब इसके ग्राफ में एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो स्पीड इसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है जो इसकी एवरेज स्पीड है वही इसकी कांस्टेंट स्पीड होगी. ठीक है. Okay, the thinking distance is the distance traveled by a car between the time that a hazard is seen and that time that the brakes are applied. Braking distance is the distance traveled while the car slows down to rest. Table 7.1 shows the thinking and braking distances for an alert driver when the car travels at different speeds. ठीक है? So when the car travels at different speeds. Okay. किधर गया मैं? Is the distance while the car slows down to rest. Okay, so braking distance is distance traveled while the car slows down to rest. Table 7.1 shows thinking and braking distance for an alert driver when the car travels at different speeds. So
complete the table 7.1. So if we have to complete this table, तो बेटा थिंकिंग डिस्टेंस 9 है फिर 18 हो रहा है। अब ये 9 का टेबल चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। So we get 1 mark for that. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27. फिर इधर 20 का टेबल चल रहा है, 22 are 40, 3s are 60, 4s are 80, तो ये 20 का टेबल है, ठीक है। वो कह रहे टाइम इट टेक्स फॉर ड्राइवर टू रिएक्ट टू द हैजर्ड इज कांस्टेंट एट डिफरेंट स्पीड्स, एक्सप्लेन हाउ द टेबल शोज दिस, ठीक है। तो अब आप उसको ये कहोगे कि जो थिंकिंग डिस्टेंस है it increases with a constant trend, ठीक है, as the speed is increasing at a constant trend. So हम इसको in short में कह सकता हूँ कि both speed of car and thinking distance increases at a constant trend, ठीक है। सो 1 मार्क हमें इस बात का मिल जाएगा। दूसरा आप उसको थोड़ा सा वैल्यूज के रिस्पेक्ट से बेटा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। सो वैल्यूज की रिस्पेक्ट से मतलब क्या है, आप उसको ये बता दो कि व्हेन द स्पीड डबल्स थिंकिंग डिस्टेंस डबल, ठीक है। व्हेन व्हेन स्पीड डबल्स 20 से 40 होता है, सो थिंकिंग डिस्टेंस ऑल्सो थिंकिंग डिस्टेंस डबल्स, and when speed increases 3 times, thinking distance also increases 3 times. So ये constant ट्रेंड है जिसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको ये बता सकते हो, ओके। अब अगला वो कह रहे स्टेट व्हाट हैपेंस टू थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन द ड्राइवर इज टायर्ड। अगर ड्राइवर टायर्ड होगा तो उसको सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, सो थिंकिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज। Okay, what happens to the braking distance? There will be no change in it because the braking distance depends on the quality of tires, road conditions, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, वो फोर्स वगैरह वो चीजें वैसी ही रहती है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है इट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द रोड कंडीशंस और द क्वालिटी ऑफ टायर्स। Question number 8. Figure 8.1 shows a ripple tag and the crust of the water waves that is produced in it. The frequency of the water wave is 2 Hz and its amplitude is 3 millimeter. Calculate the number of crust produced in 1.5 seconds. Frequency का formula क्या है? Number of cycles per unit time. और frequency का एक और formula F is equals to 1 over T. So we have to calculate the number of cycles. So we have to multiply the frequency with time. So let's just find out the number of cycles will be frequency into time. Frequency is 2 and the time is 1.5. So we get 3. Okay. So how many number of crust? 3. Height of the wave is measured from the level of the undistributed surface of the water. The height of the wave at one point is 0 at time t is equals to 0. On figure 8.2, draw a graph to show how the height of the wave at this point varies with time. Okay.
So this is for 2 marks. और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेट करने को? वो कह रहे हैं हाइट ऑफ द वेव इज मेजर्ड फ्रॉम लेवल ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड surface of the water. The height of the wave at one point is 0 at time 0. ठीक है? So और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? That is 3 millimeters. Okay? Yeah. अब आपके पास उसने अच्छा व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर दिस वेव? अगर इफ आई हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू 1/f. सो 1/2 वी गेट 0.5 seconds. तो 0.5 seconds के अंदर वी विल कंप्लीट वन होल साइकिल ऑफ अ वेव. ठीक है? ओके. सो 0.5 सेकेंड्स में यहां तक एक साइकिल है, फिर 1 सेकेंड में अगला है, और फिर 1.5 सेकेंड्स में अगला है. उसने कहा है कि 0 सेकेंड्स में उसका एम्पलीट्यूड 0 है. वैसे उसने उसका एम्पलीट्यूड बताया हुआ है कि 3 मिलीमीटर तक जाता है. नाउ सिंस इट्स अ साइनोसॉइडल वेव, सो यहाँ पे ये 3 एंड वी हैव -3 ओवर हियर. ठीक है? ये हाफ साइकिल पे यहाँ पे भी इसका एम्पलीट्यूड 0 होगा. ये वो पोजीशन है जहां पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है. ओके. अब शुरू में the height of the wave is measured from level of this height of the wave at this draw graph to show how the height of wave at this point varies with time. तो 0 और 0.25 के बिल्कुल जो मिडिल वाला है, इस पे इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है वो 3 है, और इनके जो मिडिल में यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? -3. ठीक है? So we have a sinusoidal wave. So we have this sinusoidal wave. फिर again यहाँ पे it's going to repeat. ठीक है? And then at this point, so this is how we draw the okay. So this is how the sinusoidal wave will look like with an amplitude of 3, which is already given to us. Time period आपने formula से calculate कर लिया था. 1/f, 1/2, 0.5 seconds was the time period. 0.5 seconds में एक cycle complete होगा. Frequency towards. Yes. The frequency of the wave is increased. Describe how the apparatus shown in figure 8.1 is adjusted so that frequency of the wave is increased. So, okay, so we can just move the wooden bar faster. जितना तेजी से आप इसको करोगे, तो उसकी more number of cycles will be produced per unit time. So that means कि more frequency. So move the wooden bar faster. Move wooden bar faster. ठीक है? सो जितना ज्यादा आप तेजी से उसको करोगे, तो वो उतनी जल्दी उसकी जो है ना वो कर देगा. बाकी आप रबर बैंड जितना टाइट कर दोगे, तब भी उसकी मूवमेंट जो है वो उतनी तेजी से होगी. सो यू कैन आइदर से कि मूव द वुडन बार फास्टर, और यू कैन से कि टाइटन rubber band. State what happens to speed and wavelength of the wave as the frequency Speed. increases. ठीक है? So there will be no change in the speed because at the end है तो water waves ही ना. तो water waves जो होती है, water waves की जो speed है, that remains constant. लेकिन अगर frequency increase हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि नंबर
अच्छा, उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स पे फर्क पड़ता है ना, तो वेवलेंथ पे चेंज आएगा। फॉर्मूला था ना v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर यहाँ पे f को सब्जेक्ट बनाए, सो f और लेमडा का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, सो वेवलेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, प्रोवाइडेड द स्पीड इज कांस्टेंट। The apparatus shown in figure 8.1 can be used to demonstrate refraction. State the additional apparatus needed to demonstrate the phenomena of refraction. So you just have to place a glass block to create a deep and a shallow region. ठीक है? Use glass block. वैसे उसने सिर्फ नाम पूछा हुआ है, तो आप अगर सिर्फ apparatus का नाम बता दो, ग्लास ब्लॉक या वुडन ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक आप यूज कर लो। ठीक है, टू क्रिएट शैलो रीजन। Then we have drawn figure 8.3 to show the refraction of the water wave. Label a boundary where the refraction occurs. Okay, okay, so we have to, अब ये आपके पास एक दरमियान में ये बाउंड्री है। ठीक है, so this is a boundary. So we have to show that it is traveling from deep to shallow region. Sorry, बाउंड्री आपकी मर्जी है, आप मतलब उसकी जो है ना बाउंड्री खुद से मतलब वो बता दोगे। अच्छा, अब आपके पास दिस पार्ट इज स्पेसिफिकली फॉर जस्ट फॉर 3 मार्क्स। अब हमने यहाँ पे शो करने हैं वेव फ्रंट्स। ठीक है, विद इक्वल स्पेसिंग। So these are the wavefronts. ओके, एक वाले में इनके दरमियान की स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिंग। सो दिस इज द वेवलेंथ 1। ओके, नाउ अगले में आई एम गोइंग टू ड्रॉ wavefronts which are closer, but the spacing should still be equal. Okay, so अब हमारे पास, just give me, ओके, सो अब आपके पास दिस इज डीप वाटर एंड दिस वन इज शैलो वाटर। ठीक है, शैलो वाटर में इसकी वेवलेंथ कम होती है और डीप वाटर में वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है, बट अगेन द स्पेसिंग स्टिल नीड्स टू बी इक्वल। ठीक है, okay, so when a wave travels from deep to shallow water, उसकी wavelength भी कम होती है और उसकी speed भी कम होती है, but the frequency remains constant. ठीक है, okay, yes, number of cycles per unit time. Figure 8.4 shows a connection to the internet made from a remote station A. Using a satellite above the Earth's surface, data is sent between stations A and B using microwaves which travel to and from the satellite. Station B is connected directly to the internet using optical fiber. The speed of microwave is this. Station A and B are each 560 kilometer from the satellite. तो ए का सैटेलाइट तक का डिस्टेंस 560, फिर सैटेलाइट से बी तक का डिस्टेंस 560। कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रैवल कर रहा है? 560 इंटू 2। ठीक है, so 560 times 2 we get how much? Let me, okay, so we get 1120 kilometer. So we have to convert it into meters, so we will multiply it with
with 1000. So we get 1, 1, 2 टेट्रा जीरोस 1 2 3 4 स्पीड उसने दी हुई है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वी हैव टू फाइंड टाइम तो मैं टाइम और स्पीड की जगह स्वैप कर देता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड डिस्टेंस की जगह 112 टेट्रा जीरो and the speed is 3 multiplied by 10 की power 8. So you put the whole thing on the calculator 112 4 divided by 3 1 2 3 4 5 8. Okay, so we will get the value which is uh, which is 0.0037 seconds. So 0.0037 seconds. So this is what the time is going to be. Okay, and in the next part, the same data can be sent from A to B in a shorter time along the surface of the earth using infrared waves to carry the information in optical fibers. State one property that infrared waves and microwaves have in common. ठीक है? So they both are transverse wave or they both travel at the speed of light. ठीक है? So this is what we can write. They both are transverse waves. ठीक है? They both travel at speed of light. ठीक है? Okay. What is the next thing? Just one other advantage of using optical fibers to connect stations between A and B. ठीक है? अच्छा अगर आप ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हो ना अब ऑप्टिकल फाइबर्स हम किसकी yes so if we use optical fibers so optical fibers जो है they are less expensive ठीक है so if we use optical fibers so they are less expensive ठीक है और the biggest advantage of optical fibers is more data is transferred more data can be transferred. Acha, we are just left with last one more question. ठीक है, we will complete this question and then we are going to just end the class after that. Okay, thorium 229 is a radioactive isotope used in several medical applications that involve alpha and beta particles. During ionization, a helium atom becomes a helium ion. Figure 9.1 shows a diagram of a helium ion. State how structure of a helium atom differs from the structure of helium ion. तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि helium atom ठीक है और हीलियम आयन के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है क्लोज द डोर हीलियम आयन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है व्हिच मींस कि इट हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन और यू कैन राइट हीलियम आयन हैज वन लेस इलेक्ट्रॉन देन हीलियम एटम Next part may state how the structure of an alpha particle differs from the structure of the helium ion. ठीक है? Okay. Alpha जो particle होता है, it only contains protons and neutrons. It does not contains any electrons. जबकि helium ion जो है, helium ion का proton number बेशक 2 है, so helium ion has one more electron. Even अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है तो it has one more electron. ठीक है? Alpha particle has no electron while helium ion
has one electron. Okay. A nucleus of thorium decays by alpha particle emission to a nucleus of element X. ठीक है. The nucleus of X then decays to a nucleus of Y by beta emission. ठीक है. थोड़ा सा ये प्रिंटिंग का यहाँ पे इशू है. लेट मी जस्ट ओपन द फाइल. मैं फिर वहां से आप लोगों को देख के बता देता. न्यूक्लियस ऑफ एक्स देन डिकेज टू अ न्यूक्लियस ऑफ वाई बाय बीटा emission. ठीक है. Complete table 9.1 to show the number of protons and neutrons in a nucleus of X and in a nucleus of Y. So this is thorium. So actually the equation is like this. Okay, we have this thorium with a proton number of 90 and a mass number of 229. It decays to X and decays alpha particle. So X का proton number हो जाएगा 90 minus 2 88 और इसका mass number हो जाएगा 229 minus 4 225. So he's saying how many protons are present in nucleus X 88 and how many neutrons 225 minus 88 we get 225 में से 88 minus कर दोगे so we get the number of neutrons which is 137. Okay, so we get 137 neutrons. Now the element X with a proton number of 88 and a mass number of 225 decays to form Y and it releases beta. So beta की वजह से proton number में 1 add होके 89 and the mass number stays the same which is 225. So additionally we give negative sign. Yes. ठीक है. So the number of protons in Y is 89 and the number of neutrons will be 225 minus 89 which is 136. Okay. So ये हमने fill कर देना है. Experiment can show that a sample of material is radioactive. Describe apparatus and procedure used to show that a sample emits both alpha particles and beta particles. You may draw a diagram of the apparatus if you wish. So ये वो Geiger-Muller tube वाला. So Geiger-Muller tube क्या है? So we have a radioactive source. We will place a paper and then we will place an aluminium sheet, but we are going to do that later. And then we will have a GM tube which is connected to a count meter or rate meter. So ये GM tube, ये paper, ये aluminium sheet and ये आपके पास radioactive source which is emitting alpha and beta particle. और ये क्या है? This is a count rate machine. Okay, so अब आप ये लिखोगे कि place a radioactive source in front of the GM tube and note down the count rate reading. ठीक है? Then place a paper between the source and GM tube. If the count rate reading falls, alpha particle is present. Then place an aluminium sheet between a radioactive source and GM tube. If the count rate reading falls again, then beta particles are also present. ठीक है? So ये 4 mark है. Place radioactive source in front of GM tube. ठीक है? So we have to place the radioactive source in front of GM tube and note count rate. ठीक है? Then place paper between source
and GM tube if count rate falls again. If count rate falls, alpha particle is present. ठीक है? So if count rate falls, alpha particle is present. ठीक है? Now place aluminium sheet between source and GM tube. ठीक है? Along with paper. तो पेपर आपने वहीं रहने देना है. Along with paper, if count rate falls further, then beta particle is also present. If count rate falls again, it means beta particle is also present. फिर वो कहते हैं state what is meant by the half-life. Time required for the count rate of an unstable nuclei to decay to its half. Time needed for count rate of unstable nucleus to decay to its half. Okay, sample of pure thorium-229 contains 4 into 10 raised to the power of 4 atoms. After 22,000 years, the number of atoms of thorium-229 in the sample is this. Determine the half-life of thorium. So we have to determine the half-life of thorium-229. Okay, so in order to calculate the half-life, एक तो either you can use that way जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, ठीक है, कि आपका इनिशियल काउंट रेट है 4 into 10 की पावर 14, इसको हाफ करते जाओ, 2 से डिवाइड करूंगा 2 into 10 की पावर 14, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा, सो 1 into 10 की पावर 14, 1 into 10 की पावर 14 को फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा, सो दैट इज 0.5 into 10 की पावर 14 एंड दैट इज इक्वल टू 5 into 10 की पावर 13. अब कितनी हाफ लाइफ गुजरी है? 1, 2, 3. और उसने आपको बताया हुआ है कि टोटल टाइम कितना लगा है, दैट इज 22,000 ईयर्स. ठीक है? सो अब अगर इफ यू हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, सो हाफ लाइफ कैसे निकलेगी? टोटल टाइम ऑफ डिके ठीक है डिवाइडेड बाय what the number of half lives. So total time of decay कितना है? 22,000 years and divided by 3. So 22,000 divided by 3 and the final answer that we get is 22,000 divided by 3 is 7,333 years, rounded off to two significant figures. So the final answer is 7,300 years. ठीक है? Either आप इस तरह से कर लो, or if you're willing to do it with the help of the formula, ठीक है? So formula क्या था? Final count rate किसके इक्वल है? Initial count rate डिवाइडेड बाय 2 की पावर n. ठीक है? अच्छा, अब
Yes. n number of years. Yeah. Okay. So n is the number of क्या कहते हैं half lives. ठीक है. So what is the initial count rate is 4 into 10 की power 14. इन दोनों की जगह swap final count rate is how much? 5 into 10 की power 13 और यहाँ पे 2 की power n. So 4 over 4 divided by 5 we get 0.8 and 0.8 into 10 की power 10 आ जाएगा वहां से तो we get almost 8. यहाँ पे आपके पास आता है 8. Now 8 can be written as 2 की power 3. So number of half lives कितनी गुजरी है? NS3. ठीक है. So उसने कहा था half life निकालो, then you use this formula again. So you'll get the final answer. So it's totally your choice which way you're willing to do this question. ठीक है. So this marks the end of the entire paper. So that's it for today. अगर आप लोगों के पास कोई queries हैं तो बेटा you guys can